Very good morning, everyone. Very good morning, and welcome to this journey called the Magic Book. And today is our first day of this magical journey, and I see a lot of names. आप में से बहुत सारे लोग I see आप हमारे साथ पिछले months में भी थे in this wonderful journey, and I see a lot of new names also who are on this call with us. So my name is Annie Munjal, and I'll introduce myself in some time because for all the new people who are here with us. New people मतलब जो कि इस journey में पहली बार आ रहे हैं. So yes, okay. So before I introduce myself, just a second. Thank you. दरवाजा बंद कर दो. So, before I introduce myself, I want you to firstly share कि आप किन किन cities से, like we have people joining us, आप कौन सी city से हैं? If you could just write in the chat so that we know what all cities से people are here and what all age groups से we have people joining in. Okay, so you're from Delhi, ठीक है. Yes, Ulka ji, okay, very good to have you here. Okay, so Swati ji is from Bombay. Very good morning. From Bhiwandi. Okay. From Gorakhpur. From Jalna, Maharashtra. From Pune. Kolkata. Ambala. और कहाँ कहाँ से हैं बाकी सब? Where all are you from? Okay, and what all other age groups of people who are attending this session? And what do you do? And why you're here? हाँ मतलब why are you here? आप में से so you're Prachi from Bombay, 33, okay. So why are you on this call today? किसी ने आपको बुलाया है? Anybody who's here for the first time, like जो आप इस journey में पहली बार you are doing it from day zero? Anybody like that on the call? Just write yes in the chat if this is going to be your first time with this magical journey. Everybody's done it before. Interesting. ठीक है, okay. Everybody's done it before. Yes. कमाल की बात है ये तो. ठीक है. So my name is Annie Munjal, and I'm aged 22. 20, sorry, I forget my age. I'm aged 23, and I stay in Delhi, and I am not a coach. I'm not a coach at all. I am just somebody जिसने अपनी life में I have really gained a lot in my life through this practice of gratitude. A lot. Apni, through the science of manifestation, through the science of gratitude, through the practice of it, इसके अंदर रहना, अपनी dreams को accomplish करना, उन areas के अंदर मैंने बहुत benefit experience किया है by staying in these practices, and मैंने अपने लिए ये experience किया है, and my only intention is to make that available for the people, each and every person in the world. Because I have really benefited. I know my parents introduced me to it. I know my family is benefiting from it, and it's amazing. And the only intention is mera personally is that is for the young people. मतलब जब मैंने मैजिक बुक सेशन लीड करना भी स्टार्ट किया था तो आई इनिशियली डिड इट ओनली फॉर द यंग पीपल बिकॉज मेरे को आई गॉट अ फ्लेवर ऑफ दिस एट अ यंग एज ऑफ 15 because of which it really helped me to whatever I wanted. Like I remember I've shared this example before, but I remember I was in school and I was just an average student. I used to score like C pluses and B minuses, and मेरे हिसाब से ठीक था वो मार्क्स भी लाना. A plus तो मुझे पता भी नहीं था क्या होता है, कैसे होता है, आता भी है, is it just a myth, that people stay in. And I was in 5th class at that time,
And I remember it was our PTM. My mom had come with me, and उस टाइम पे there was this child, you know, जिसकी मॉम के साथ वो आया हुआ था. He was the class topper. And उसकी रिपोर्ट कार्ड में ना हर जगह पे A+, 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 फिजिक्स A+, मैथ्स A+, साइंस दिस इज करके सब जगह पे उसके A+, थे. एंड माय मॉम एंड आई वी बोथ लुक्ड एट इट कि अच्छा. एंड आई रिमेम्बर उस वाला जो साल था ना, उस साल मेरी कंप्लेंट्स भी आई थी. मतलब वैसे टचवुड मेरी कभी पीटीएम में कंप्लेंट्स नहीं आई, मगर उस साल स्पेशली आई थी कि एनी की कंपनी अच्छी नहीं है, उसको आप चेक करो, अदरवाइज यू नो शी माइट गेट आउट ऑफ हैंड. सो उस तरह की कंप्लेंट आई थी. सो नॉर्मली एनी पेरेंट वुड गेट स्कैर्ड कि फिफ्थ क्लास में ऐसी कंप्लेंट्स क्यों आ रही है इस बच्चे की. बट you know, since my mom, so I would say she was the first person जिन्होंने, even far before this magic book came into our lives, she knew of this practice, and then she told me about it. And मैंने खुद ब खुद, so I'm from DPS Mathura Road, and हमारे वहाँ पे ना एक स्कॉलर करके होता है कि एक स्कॉलर बैच मिलता है अगर आप एक सर्टेन नंबर ऑफ मार्क्स लाओ. सो देन आई सेड यार बहुत हो गया फिफ्थ में जैसे किया सो किया, मगर इन द नेक्स्ट ग्रेड आई वुड रियली लाइक टू बी अ स्कॉलर एंड मेक माई मॉम प्राउड. लाइक अभी जो उनको मेरी वजह से ऐसे सुनना पड़ा, नेक्स्ट ईयर आई वांट टू मेक हर प्राउड व्हेन शी कम्स फॉर दैट स्कॉलर बैच सेरेमनी. And I was a very average student. I had no idea how to score A pluses. And then using this science of manifestation, which we are going to talk about, I was able to accomplish that in the sixth grade itself. I still don't know how that happened. And mind you, a fifth-year-old, fifth class ka bacha is only 10 years. And that is when, like, you know, ये जो अभी हम साइंस की बात करने जा रहे हैं, जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ये एक ऐसी साइंस है जो एक 10 साल का बच्चा भी या 6 साल का बच्चा या जो भी इंसान सुन सकता है, समझ सकता है, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. And you can make anything in your life come true. मतलब I can speak for myself. As on today, if I look back, from the kind of business I wanted to do, to the kind of money I want to earn every month, to the kind of number of छुट्टियां I wanted to take कि मुझे हर महीने एक छुट्टी पे जाना है या हर 3 महीने एक छुट्टी पे जाना है. Every single thing that I wanted for myself in my life, this manifestation and law of attraction has enabled me to live that life. And it's possible, you know, it's possible. Whatever you want for yourself in your life is possible out of these practices. जो पहले, and thank you God, matlab parents are there, and a lot of other practices, you know, I was introduced to at a very young age. There was this program called Landmarks program, then Sadhguru's Shambhavi Mudra, Vipassana का एक बच्चों वाला होता है Anapan. So I think in 10th grade I did that. So from a very young age, you know, and all these programs, they talk about the same thing more or less. So that's why I thought कि मुझे अपनी young age पे ये science मिला जिस वजह से I have now the power to make my dreams whatever I want come true. तो इसी तरीके से अगर बाकी सारे बच्चों को भी, टीनेजर्स को भी ये नॉलेज का एक्सेस मिलता है, इस प्रैक्टिस का एक्सेस मिलता है एट दैट यंग एज, सो देयर होल लाइफ इज अहेड ऑफ देम. यू नो, वो जो चाहे, जो करना चाहे, दैट्स पॉसिबल. So that's why and so I personally prefer young people and teenagers on this group, but it's okay if you're older than that, it's fine. You can also gain equal and more benefits from this participation in this program. Okay, so let's see. So you are 33, you have seen magical practices and powers in the past. That's why you want more magic and you want to stay in gratitude. बहुत बढ़िया. ठीक है, and I will share more and more about my life, you know, as we go along in this journey. अच्छा, अगर मैं कुछ इंग्लिश में ज्यादा बोल रही हूँ, यू वांट मी टू स्पीक इन हिंदी, जस्ट राइट इन द चैट. मैं हिंदी में ज्यादा बोल रही हूँ, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश,
Just write in the chat if you can't understand any bits, because this program is for you. This session is for you, and for you to take utmost value from this program. Okay. So anyone wants to share, आप आज इस कॉल पर क्यों हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है सेशन से? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी की भी इस सेशन से? So you can, I don't know, can't hear you. So why are you here? So my question to all the people on this call, even to the people who have, done this session before, why are you on this call? क्या चाहिए आप? गुड मॉर्निंग एनी, माई सेल्फ बातूर। हाँ जी। हाँ, मैं इस कॉल पे इसलिए हूँ कि पूरा मेरा ऑरा चेंज हो जाए और इन एवरी एरिया मुझे सब कुछ मिल जाए, इसलिए मैं ये कॉल पे। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Who else? आप इस कॉल पर क्यों हैं? Just share Good it. morning. Good morning. Good morning. I'm Alka. I'm in this session. एकदम रग रग में हर एक रोम में ग्रेटिट्यूड भर जाए, भूलना नहीं है, बस हर समय इसी पे ही रहना है। Okay, very good. Thank you for sharing, अलका जी। एनी जी नमस्कार। नमस्कार। मैं इस कॉल पे आपको धन्यवाद देने के लिए हूँ, और आप इस यात्रा को बार बार चालू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हिम्मत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको अप्रिशिएट करने के लिए कि आप इतना लगातार किए जा रहे हैं, तो उसको करने के लिए। और मेरे जीवन में आप इतने छोटे होने के बावजूद, जैसा आपने कहा कि छोटे बच्चों के लिए किया था, लेकिन हम 45 की एज में आके भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और जो मैं इतने समय से सोच रहा था कि कभी मैं सेशन लूंगा, मैंने आपसे लास्ट भी शेयर किया था कि 14 तारीख से मैंने सेशन लेना शुरू किया, और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। जितना मेरे को लगता था कि मुश्किल होगा मुझे समय निकालना, लेकिन रोज समय निकलता है, अच्छे से सब चीजें हो रही हैं। और जैसे आप अपनी मम्मा की हेल्प करते थे, मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर देते हैं उसके अंदर, तो उनमें भी टीम का एक अच्छा सा हो रहा है। तो कई बार कुछ चीजें मुझे जूम पे नहीं मालूम थी, तो उन्होंने किया। तो मेरा तो ये मानना है कि आपके साथ जब जब मौका मिलेगा बीच में, क्योंकि मेरे अपने सेशन भी रहते हैं थोड़े से, लेकिन जब जब मुझे यूट्यूब पे भी दिन में टाइम मिलता है आपका और अश्विन जी का मैं सुनता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैंने आपका मैसेज पढ़ा था कि दोबारा से शायद ये आपका 14th बैच है, तो हाँ जी। लगातार इतना लगातार करना, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, मैं उनको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जो भी आपको ये सेवा दे रहा है, और एनी जी जो ये कार्य कर रही है, कोई छोटी बात नहीं है। रोज अपने समय को निकाल कर रोज कॉल पे आना और उसको देना, ये अपने आप में बहुत एक बड़ा कार्य हो जाता है, क्योंकि आप उसमें कहीं ना कहीं बन जाते हैं। आपके बाकी जो कमिटमेंट हैं वो सब पीछे छूट जाती हैं। कभी कभी शाम को, अब मेरा 9:30 बजे रात का होता है, तो कई बार कुछ ऐसी कॉल है जिसमें बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे पहुंचना ही है। तो आपका भी सुबह 7:30 बजे का लोग कर रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए। और डेफिनेटली आपके तो इतने एक्सपीरियंस हैं, सच में आपका इतना ऑरा स्ट्रांग है कि आप सब लोगों को फायदा होने वाला है, चाहे आपने जादू कितनी बार भी क्यों ना किया हो। तो बहुत बहुत, मेरी आज मेडिटेशन की क्लास थी, मैंने उसमें से 15 मिनट की इजाजत लेके मैं उनको थैंक्स कहूंगा, उसके बाद में मैं दोबारा से ज्वाइन करूंगा, यूट्यूब में देखूंगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका यह कार्यक्रम और बाकी जितने भी जीवन में कार्यक्रम है बहुत सफल हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Sanjeev ji, for sharing. Thank you, and thank you for your thank you. Yes, okay. So someone जो आज कॉल पर पहली बार, like आप अगर इस आप पहली बार इस जर्नी में आए हैं, आपको कुछ नहीं पता what to expect from it. Somebody like that on the call जो ये sessions पहली बार attend कर रहे हैं, like for the very first time. Yes, no. Hi, good morning. Good morning. So my name is Raza. So I was introduced to this by my manager. So I was just feeling low from like last a couple of months because I've lost one of my family members. So I was just bit disturbed with everything and lacking of gratitude and everything. So he asked me to join this to just have a a great change in life. I don't know what is going to happen. I'm just here that how can I have a change in my life. Looking forward Good. to that.
And I'm so glad that, irrespective of what is happening in your life, आपने तब भी अपने लिए, अपनी life के लिए stand लिया. And actually you took out an action कि आपको पता भी नहीं है क्या होने वाला है, मगर still to come out of that existing zone and to get back to where you were before that happened, or even so, really acknowledge you. Thank you so much for being here. And my only request to you is that ये हमारी 30 दिन की journey है. I can guarantee you कि after this journey completes you will be a different person. My only request is just make sure आप इस 30 दिन की journey के दौरान बस बने रहें. Whatever practices will come your way, just stick through it, and I can assure you that after this you will not be the same person anymore, and something inside of you will change. Thank you for I sharing. really hope so. Thank you so much. Thank you. Yes, okay. Who else is here for the first time, and what is your expectation from this session? Morning, ma'am. Good morning. My name is Annie, don't call me ma'am. Annie, this is Pooja from Ambala. हाँ जी. मैंने पहले आशमीन मैम की क्लासेस एज रिकॉर्डेड सेशन सुने हैं यूट्यूब पर, लेकिन कभी कोई असाइनमेंट नहीं किया, सिर्फ सुना था उसे. तो अब मैं फर्स्ट टाइम रेगुलर सेशंस अटेंड करना चाहती हूँ, और मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि बिकॉज ऑफ माय लैक ऑफ पॉजिटिविटी मैं अपनी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज फेस कर रही हूँ, और तो मैं हेल्थ वापस चाहती हूँ अपनी, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहती हूँ. ग्रेट, वेरी गुड. तो ये आपको बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, एंड वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू. Yes, okay. Who else? Hi Annie, Sunita here. Good morning. My husband has recommended this to me. This is the first of a kind lecture I am attending. So no specific reason as such, but my husband insisted that this session will definitely change your life and add in lots of positivity. And I have seen that this actually has brought some changes in his life, and that's why definitely he has recommended this to make my life, which is good, to be even more better. Very good. Thank you, Sunita ji, for sharing. Thank you. Okay, I just saw time is 7:40, so I think we'll start with the reading of today's chapter. And thank you and welcome to all of you on this wonderful journey. And आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा चैप्टर है, that is called, वो ना हमारे को थोड़ा बेसिक्स बताएगा मैजिक बुक के बारे में, मगर उसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है व्हाट आर योर ड्रीम्स. ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है व्हाट आर योर ड्रीम्स. तो माय इन्विटेशन टू ऑल ऑफ यू इज प्लीज उस पार्ट तक बने रहना, क्योंकि अगर वो पार्ट आपका स्किप हो गया तो आपका एफिशिएंसी में थोड़ा हो जाएगा. And for all the people who don't know, this journey is a 30-day journey and I welcome you all on this journey. हम नॉर्मली चैप्टर 2 लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, मगर आज का चैप्टर लंबा है तो हम सिर्फ एक लैंग्वेज में पढ़ेंगे. इज इंग्लिश ओके विद एवरीबॉडी? कैन वी रीड इन इंग्लिश? कल से हम दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ेंगे, मगर आज वील रीड इन ओनली वन लैंग्वेज. ओके. एंड आज का नॉर्मली जो हमारा सेशन का ड्यूरेशन रहता है दैट इज 1 आवर मैक्स, मगर आज एज आई सेड चैप्टर की लेंथ थोड़ी लंबी है तो आवर सेशन में एक्सीड 1 आवर. दैट मीन्स टुडेज सेशन may go up to an hour and a half, but that's why we kept it on a Sunday so that you all can take out time and make sure that you attend it wholly. So who would like to read in English? Please take your name. अपने आप को अनम्यूट कर लें, अपना नाम लें. Who would like to read the chapter? So the book is The Magic by Rhonda Byrne. One word changes everything. So if you want me to read, then I can also read. So
For more than 20 centuries, words within a sacred text have mystified, confused, and been misunderstood by almost all who read them. Only a very few people through history have realized that the words are a riddle, and that once you solve the riddle, once you uncover the mystery, a new world will appear before your eyes. In The Magic, Rhonda Byrne reveals this life changing knowledge to the world. Then, on an incredible 28-day journey, she teaches you how to apply this knowledge in your everyday life. No matter who you are, no matter where you are, no matter what your current circumstances, the magic is going to change your entire life. ये जो अब हम इस बुक की जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, and I'm telling you, even if you've done this book like 10 times before, doesn't make any difference. I have read this book at least 15 times before. I've even lost count how many times I've read it. And every single time I read it, some new riddle opens up. उसका कुछ ऐसा puzzle आता है जो खुलता है, and you know, it opens up a whole new world. एंड आप सब लोग अब इस जर्नी में आ रहे हैं, इस 28 दिन की जर्नी के अंदर. एंड ये जो सीक्रेट है, ये आपको अपनी जिंदगी के हर एक पहलू के अंदर इस्तेमाल करना, सिर्फ सिखाएंगे नहीं मगर प्रैक्टिस करना भी इसके अंदर वो आपको बताएंगे. एंड कुछ फर्क नहीं पड़ता आप लड़की हैं, लड़का है, पुणे में है, महाराष्ट्र मतलब पुणे में है, दिल्ली में है, ईस्ट इंडिया में है, साउथ इंडिया में है, यूएस में है, कनाडा में है, कहीं भी, विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर फ्रॉम, डजंट मैटर. आप अभी बहुत ही लवली स्टेट ऑफ माइंड में हैं या बिल्कुल रॉक बॉटम पे हैं अपनी लाइफ के, डज नॉट मैटर. वेदर आपने अपनी लाइफ में बहुत खुशियां भी आजकल अनुभव कर रहे हो या दुखी दुख है, डजंट मैटर. ये जो द मैजिक है, जिस जर्नी पे आप आए हैं, इस किताब की इस जर्नी पे, इस किताब नहीं, इसके अंदर जो प्रैक्टिसेस है, दिस मैजिक इज गोइंग टू चेंज योर एंटायर लाइफ. आर यू रेडी on this journey to start afresh and see what it has to offer for yourself in your life? Yes, Annie. Beautiful. Annie, I want to read, Annie. Sure. May I? Sure. Archana Duggar from Kolkata. Yes, 1 second. Yes, please start reading from here. This is the one, the Emerald Tablet. By this means. By this means, you will acquire the glory of whole world. The Emerald Tablet. Sirsa 3000 to 5000 BC. So before we have even started the journey, before you even know what the magic is about, and I'm telling you, आपको जिसको लगता है ना कि आपको पता है ये magic book किस बारे में है, that's just a lie that you're living in. You can't know what this book is about. Like, you can't say I know everything. Sure, you may know parts of it, but to know everything, in its whole totality, I don't know. Even I don't know. I've read this too many times, but I still don't know. And before we start this journey, इसके अंदर जो इन्होंने ये line लिखी है कि by this means you will acquire the glory of the whole world. इस जरिए के थ्रू आप you will acquire the glory of the whole world, the Emerald Tablet. So आप सबके पास इस जर्नी के थ्रू एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा जरिया आपको मिलने वाला है, एक ऐसा मीन्स मिलने वाला है जिससे आप इस दुनिया की, सारी दुनिया की, you can acquire whatever glory. Do you understand what the word glory means? So I want you, so जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये book riddles में है, puzzles में है. So I want you to really find yourself. What does the word glory mean? Please continue. Dedicated to you. May the magic open up a new world for you and bring joy for entire existence. That is my intention for you and for the world. Yeah.
So that is my intention for you and for the world कि आप सब लोग अपनी इस 30 दिन की journey, I say 30 days because एक दिन आज का जैसे है and एक दिन जो completion session रहता है, तो इसलिए हमारी 30 दिन की जर्नी बन जाती है, वरना प्रैक्टिसेस 28 दिन की रहती है. So my it's dedicated to all the 46 people on this call. May the magic open up a new world for you and bring you joy for your entire existence. आपकी पूरी की पूरी जिंदगी के लिए, आपकी पूरी existence के लिए, may this bring you joy. That is my intention for you and for the world. Yes. So, and before we start, with what this book has to offer, let's acknowledge the people jinki wajah se this life-changing book has been made available. Please continue reading. When I first sit down to write a book, the creation begins as a joyful yet solitary one. There is just the universe and me. Then gradually the circle begins to widen, encompassing more and more people, all the whom contribute their exercise, until finally, Contribute their expertise. whom contribute their expertise, until finally you are holding the creation of a new book in your hands. The following people were a part of ever-widening circle of creation that allowed the magic to reach you. Thank you, thank you, thank you. To my daughter Sky, who worked tirelessly side by side with me editing along with Josh Gould, who contributed his scientific knowledge and research skills to help me unite the discoveries of science with the words of relation. Thanks to my editor, Kindy Black from Beyond Words, for her straightforward editing approach and problem questions, which have made me better writer. Thanks to Nick George for his creative vision, which captured the magic through the interior graphics and the front cover. To Shamush Hoare and Carla Thornton at Gozer Media, thanks for the final production of the graphics and the layout of the book. Thanks to the secret team who helped me take a new book into the world and who are the backbone of my work. In particular, my sister Jan Child, who heads up the entire publishing team, Andrea Kerr, who hands up the colossal creative team, Paul Harrington, and my sister Glenda Bell, who teamed up with photographer Raffle, Kilpatrick, and the rest of our team to create the magical pictures in this book. And thanks to the other secret team members whose behind the scenes work is invaluable. Don Zyke, Mark O'Connor, Mike Gardner, Laurie Sharapov, Corey Johansson, Shai Lee, Peter Bine, and my daughter Hallie. Thank you, thank you, thank you to my publisher, Artria Books, and Simon and Scuster. To Carolyn Reddy, Judith Kerr, Darlene Delilio, Twisney Fan, James Pervin, Kimberly Goldstein, and Isolde Saur. I'm blessed to have such an amazing team of people. Thank you, thank you, thank you to Angel Martin Velios for his spiritual guidance, love, and wisdom. To my sister Pauline Vernon and my dearest friends and family for their continued support and enthusiasm for my work. And with the deepest gratitude to those great human beings of centuries ago who discovered the truths of life and who left their written words so that we might discover them at exactly the right time. That indefinable, life changing moment when we have the eyes to see and the ears to hear. Wow. Thank you to all the people, जैसे अभी सबने नाम लिए, Rhonda Byrne ने. Thanks to all of you, because of which this
magical is a, magical is the word that I would use to define this book. Like, this is actually a very very magical book. And इसके अंदर जो practices है, it's like it really changes the person who you are. So thank you to each and every one of you for making this book come true. And I just really love यहाँ पे जिस तरीके से ये लाइन में लिखा होता है कि वो सब लोग जिन्होंने वो ट्रूथ्स ऑफ लाइफ को डिस्कवर किया एंड देन उसके बाद उसको उन्होंने लिख दिया ताकि we might discover them at exactly the right time. That indefinable life changing moment. Like, आप सब लोग भी अगर आज इस बुक की जर्नी में आ रहे हैं, भले पहली बार आ रहे हैं या दोबारा आ रहे हैं, तो it is the right time. It's exact. आपका यहाँ पे होना is not a coincidence. It is like you're entering into that life changing moment when you have the लेके eyes. जाएगा, सब लेके आएगा। क्या सोचा है? क्या सोचे? I don't know क्या सोचे. When we have the eyes to see and the ears to hear. So this is the content page of this book. These are the chapters that we will be covering. आज हमारे ये 4 chapters होंगे. So so I want to ask all of you, do you want to do all these 4 chapters today itself, or do you want to divide these chapters as दो आज दो कल? How do you want to do it? बाकी सब तो 1 chapter 1 day ही होगा. मतलब I'm just looking at the time. If you're convenient with doing the day 0 today itself, just write in the chat how you want to do it, and divide into. चलो ठीक है, then we'll divide it into. ठीक है, okay. So then we'll divide it into. Okay. So फिर आज हम ये chapters करेंगे. Do you believe in magic and a great mystery is revealed? Tomorrow we will do bring the magic into your life in a magical book. Then परसों से फिर हमारी assignment start होंगी. ठीक है? परसों से हमारी assignment start होंगी, which will be day 1 count your blessings, then magic rock, magical relationships, magic health, money works like magic, magical way out of negativity. Day 8 magic ingredient, money magnet, magic dust everyone, magic morning, magical people who made a difference, make all your wishes come true, have a magical day, magically heal your relationships, magic and miracles in health, the magic check, the magical to-do list, magic footsteps, heart magic, magnificent outcomes before your very eyes. ये मैं आपको भी बस पढ़ के बता रही हूँ ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि आगे के चैप्टर्स में व्हाट्स इन स्टोर. ठीक है? Day 22 is before your very eyes. Day 23 is magical air that you breathe. The magic wand, cue the magic, magically transform mistakes into blessings. The magic mirror, remember the magic. And then जो हमारा final day रहेगा उसमें हमारा chapter आता है your magical future and the magic never ends and about Rhonda Byrne. So this is how your 30-day journey is designed. आप मोटा मोटा ये समझ सकते हो कि इसके अंदर ये आपके it will talk about the areas that are important to you, whether it's money or your health or your happiness or your work or your heart. So all these things will be covered in this 30-day journey. So no matter where you are right now, that's why I said just stick through this journey. In 30 दिन बने रहिएगा and आपके लिए you will start to experience magics in all those areas. Okay. So for all the people who have done this journey before, just write in the chat अगर आपको अपनी लाइफ में आपने जो पिछले महीनों में अपनी ये जर्नी करी है उसके अंदर आपको थोड़ा अगर अनुभव होना स्टार्ट हुआ about magics, do they happen? Yes, no, if you've experienced magics in your life through the practices that this 30-day book will guide you through. And if yes, in what all areas you experienced magics happening, just write in the chat. अगर आपको experience हुआ तो किन किन area में you are starting to experience. So in your calmness, happiness, you need to practice more in your relationships, money. चलो, very good. ठीक है. Good. Let's start with the chapter. Please start reading. Do you believe in magic?
those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl, 1916, 1990. Remember when you were a child and you looked at life in total wonder and awe. Life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, or any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night, and you would count down the days to the magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could to every child in the world in one night, somehow he did it, and he never let you down. So Reindeer you could fly. before this book even introduces you, before this book even introduces you to the secret of what this magic is about, कि ये कैसे होगा, क्या होगा, इसने इसको आपको ये बताने से पहले ही सबसे पहले इसने आपसे ये प्रश्न पूछा है कि भैया, do you even believe in magic? Like that's the first question it asked you before anything else. Do you believe in magic? First question. क्योंकि जिन लोगों को इसमें भरोसा ही नहीं होता है वो इसको कभी पा ही नहीं पाते हैं. If you say no, there are no magics, then you can't find magics. आप आ जाओ इस बुक में कुछ नहीं होने वाला. So the first step is your belief on it कि हाँ यार जादू होते हैं. मतलब they exist. हाँ, you may not know how they happen, you may not know, but you have your belief that yes, they do exist. That is the first prerequisite in being eligible for this journey. ठीक है, तो अगर आप बिलीव करते हो वेरी गुड, यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी. एंड अगर आप नहीं बिलीव करते हो तो या तो बिलीव बना लो, नहीं तो नो पॉइंट. ठीक है. एंड सो सबसे पहले आपको ये वो मैजिक याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि जब ये इसने पूछा डू यू बिलीव इन मैजिक, तो आपने हो सकता है अपनी जिंदगी में किन किन समय पर ऐसा जादू अनुभव किया हो. Mostly it is when we were really really young, when we were really really young. And जैसे स्पेशली क्रिसमस का टाइम, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ कि क्रिसमस के टाइम पे वी वुड नॉट इवन नो कि क्रिसमस की सैंटा को कैसे पता है हमें क्या चीजें चाहिए. एंड एवरी क्रिसमस वी वुड वेक अप एंड वी वुड हैव अ गिफ्ट अंडर आवर पिलो. And it would just get so much exciting कि oh my god, there is some power that exists which is, या फिर क्लाउड्स में देखना एंड यू सी, आप क्लाउड्स के अंदर यू कैन फाइंड शेप्स कि अरे ये बादल तो घोड़े जैसा दिख रहा है, या ये बादल तो ऐसा लग रहा है जैसे रैबिट जैसा दिख रहा है या टेडी बेयर जैसा दिख रहा है. तो इन एवरी लिटिल थिंग अराउंड यू यू कुड फाइंड दैट मैजिक. या अगर आपको अपने बचपन में ये चीजें नहीं याद आ रही तो हो सकता है आपको, अगर इफ यू हैव योर ओन किड्स, you could remember it from their childhood कि जब everything around you seemed so magical and so light. yes no, अगर आपको ऐसा टाइम याद है अपनी जिंदगी का या अपने बच्चों के टाइम का, yes, when everything around you seemed like a fairy tale. Please continue reading. Reindeers could fly. There were fairies in the garden. Pets were like people. Toys had personalities. Came true. And you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits. And you believed that life was magical. There is an exquisite feeling many of us had as children, that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why as adults we love to be around children so that we can experience feeling once we had, even if
It's just for a moment. हाँ, तो हमें नहीं लगता कि we like to stay around little children, especially the happy ones, not the crying ones. Like वो बच्चे जो हर चीज में खुश हो जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, like इवन उनको तो इतने क्यूट होते हैं कि उनको आप उनके सामने ऐसे करके ऐसे कर दो, although you're just in front of them, they would get excited कि आप जैसे बीच में गायब हो गए थे and now you've come back again, and they would start laughing that, oh my god, this is so great. So we love to be around children because of the kind of innocence they have, and how they get so excited with everything that happens around them, and कैसे वो हर चीज के अंदर वो जादू खोज पाते हैं. तो जब हम उनके साथ भी थोड़ी देर समय बिताते हैं तो हमें भी भले कुछ समय के लिए ही मगर उस खुशी का अनुभव होना शुरू हो जाता है. That's why we love to spend our time with them. And कमाल की बात है, when we were born like that only, right? We were also children like them. It's only when we started to grow up and people around us, situations around us, उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया, and we started taking life a little too seriously. ओ अगर मार्क्स नहीं आएंगे तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, या ओ माय गॉड प्लेसमेंट नहीं हुई मेरी, अब मेरा क्या होगा, फ्यूचर का क्या होने वाला है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. क्लाइंट्स के बाद बिजनेस में आ गए तो क्लाइंट्स के ऑर्डर से रिलेटेड कि इसने ऑर्डर नहीं दिया, दिस दैट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. And then slowly stress and tension became the part of the life, and ये जो हमने जादू एक्सपीरियंस किया था वो धीरे 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 होते होते गायब होने लग गया. And I am here to tell you that the magic you once believed in is true, and it is the disillusioned adult perspective of life that is false. मैं आज यहाँ पर आपके पास आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो वो जादू का अनुभव किया था वो सच है. और ये जो डिसइल्यूजन्ड एडल्ट पर्सपेक्टिव है, डिसइल्यूजन का मतलब समझते हैं सब, इट्स डिसइल्यूजन, ये असल नहीं है, इट्स नॉट ट्रू. कुछ यहाँ पे डिसइल्यूजन्ड है. ऑफ डिसइल्यूजन्ड एडल्ट पर्सपेक्टिव कि अरे अब तो बड़े हो गए हो, अब तो सीरियस होना पड़ेगा, गलती हुई है तो डांट तो पड़ेगी, गुस्सा तो आ ही जाता है, जेलसी तो आ ही जाती है, मुझे नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, आई कांट, यू नो हमारे को दिमाग में पर्सपेक्टिव आने लग जाता है ना कि अरे अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे माय बॉडी डजंट वर्क फाइन नाउ, आई एम ओल्ड. ऑल दीज आर व्हाट देयर पर्सपेक्टिव्स, राइट? एंड ये जो एडल्ट पर्सपेक्टिव है जो कि डिसइल्यूजन है, वो एक्चुअल में झूठ है. दैट इज फॉल्स. एंड जो वो आपने बचपन में मैजिक एक्सपीरियंस किया था, दैट इज ट्रू, दैट इज हाउ लाइफ शुड बी. एंड अभी आप सिर्फ सुन लीजिए, ठीक है? अभी आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू आगे चलते चलते प्रैक्टिसेस करते करते आपको एक्चुअल में अपनी लाइफ में अनुभव होगा, not just as a concept but really as an experiential level, that oh my god, actually that magic is possible. That's amazing. Please continue reading. The magic of life is real, and it's real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe-inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of dreams. Of Then, your dreams nahi, aapke of your dreams. then, then you will wonder how you ever could have given up in believing in the magic of life. You may not see reindeer fly, but you will see the things you have always wanted appearing before your eyes. And you will see the things you have dreamed of for so long suddenly happening. You will never know exactly how everything weaved together for your dreams to come true.
because magic works in the invisible realm. And that's the most thrilling part. Are you ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every day like when you were a child? Get Are ready you, for the no. So it's a question that it's asking. It's not just reading. Yeah, all the 49 people on this call, it's speaking to you. तो क्या आप तैयार हैं to experience the magic again? क्या आप तैयार हैं to be filled with awe and wonder every day, like when you were a child? Like you will wake up and you'll feel like, oh my God, this is so beautiful. So, are you ready? Is the question. Yes, no, yes, badhiya. Okay. Yes, so if you are ready, then very good. Get ready for the magic. तैयार हो जाओ. लेटे हुए हो तो खड़े हो जाओ. Make sure your backbone straight. Because अगर अपनी इस magic के लिए तैयार होना, it's like get set ready. So get ready for the magic. Our adventure begins 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. So now the story is about to unfold. Yes, please start reading. a great mystery is revealed. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scripture, and it has mystified, confused, and been misunderstood by the people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, and it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word: gratitude. Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. हाँ जी. So ये जो अब आपको बता रहा है, ये this is so अच्छा, for all the people जिनको who like to be called intelligent, and to be called wise. तो आपकी जो भी विजडम है ना, वो सारी की सारी विजडम आपकी आज और कल में कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, मतलब जितना भी ज्ञान प्राप्त आप कर सकते हो वो अभी इस डे जीरो में ही कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, उसके बाद आती है प्रैक्टिसिंग. मतलब आपको अगर सिर्फ अपना ये भरना है तो वो आपका हो जाएगा. उसके बाद आएगा जो आपने अपना ज्ञान भरा है उसको एक्चुअल में अपनी लाइफ में लेकर आना, उसको प्रैक्टिस में लेकर आना. इट्स वेरी सिंपल सिंपल एक्सरसाइजेस. ठीक है, सो सो अभी ये इसने आपको 2 लाइंस में जिस्ट बता दिया है पूरा पूरा मैजिक बुक का. It has told you the gist of the magic book in 2 simple lines, which is whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. ये पूरी बुक का जिस्ट है 2 लाइंस में. सिंपल. आपको अगर ये 2 लाइंस आपने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लिया है, बुक आपकी प्रैक्टिस में आ गई. एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स. इजी इन द सेंस, मतलब यू मे नॉट बी एज अवेयर कि आप इस लाइन को अपनी लाइफ में कितना अमल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. सो दीज प्रैक्टिसेस जो अभी आएंगी हमारी परसों से, दे विल रियली हेल्प यू विद दैट. सो दिस इज व्हाट द सीक्रेट टू द मैजिक इज इन योर लाइफ. प्लीज कंटिन्यू रीडिंग. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear.
2,000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have, you lose. You will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words. If you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the Quran, the promise of gratitude is equally empathic. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of the universe. So this book is not a religious book. Okay? This book is not a religious book. It doesn't matter whether you're Hindu, you're Muslim, you're Sikh, you're Christian, you're atheist, you don't believe in God at all, it's fine. It doesn't matter. Okay? This book is not religious in nature. It is a universal law that we will be talking about. Universal law क्या होता है? चलो उसके बारे में अभी पढ़ेंगे. ये बुक जो है इसके अंदर ना ये जो हमने 2 लाइनें पढ़ी, whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. And this was, this is the gist of it. And ऐसी similar lines आप किसी भी होली बुक को पकड़ लो, whether it is Quran, whether it's Guru Granth Sahib, whether it's Bible, whether it's Gita, you take any holy book, they talk about everything. अभी हम आगे पढ़ेंगे. They all have talked about the same thing. They have said it in different ways, but the gist is this only. And this book is not, ये आपको अपनी जिंदगी में if you want to live a magical life, a life of your dreams, तो उसका इसने आपको तरीका it's going to tell you. And universal law का मतलब क्या होता है? जैसे law of gravity, कि आप फर्क नहीं पड़ता आप कनाडा में बैठे हो या जापान में बैठे हो, अगर आप चौथी मंजिल से छलांग मारोगे तो नीचे ही जाओगे. Doesn't matter whether you're a very good person or very bad person, doesn't matter. अगर आप चौथी मंजिल से छलांग मारोगे तो नीचे ही जाओगे. You can't say अरे मगर मैंने तो सबका बहुत भला किया था, मैं क्यों नहीं उड़ा. You can't. It's the law of the universe. It's the same for everybody. So ये जो हम लॉ बात करने जाएंगे इस जर्नी के थ्रू, that is a universal law that applies to everybody. You believe in it, you don't believe in it, doesn't matter. आप बोल दो कि मैं ग्रेविटी में बिलीव नहीं करता, सब झूठ है, तो क्या ये आपके ऊपर काम करना बंद कर देगी? नहीं, it's still going to work, right? So similarly, this law that we are going to discover is a universal law. Please continue reading. It's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life, according to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets. Like attracts like. It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. If you think, I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I am coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble,
then you must attract more of these experiences. But if you think about what you are grateful for, like, I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It is universal law. So the universal law that we are talking about here is known as the law of attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसको अगर आप सिंपल शब्दों में डालें तो उसे कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, या जैसी करनी वैसी भरनी, या व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी, राइट? तो उसी तरीके से ये बोलता है कि आप जो बोल रहे हैं वो ही आपके साथ होगा, वॉट एवर यू आर सेइंग वो ही आपके साथ होगा। तो भले ही आप अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए बोल रहे हैं, अरे यार मैं क्या बताऊं, मेरी तबीयत तो बहुत ढीली है, बहुत ज्यादा थक गई हूं मैं, तो आप खुद ब खुद ही अपनी जिंदगी के अंदर वो ढीली तबीयत को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे की कंप्लेन कर रहे हैं कि अरे मेरा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, मैं कितना भी बोल दूं उसे कुछ समझ में नहीं आता, इतना भागता दौड़ता रहता है, कुछ काम नहीं करता, पढ़ता नहीं है, सो यू आर ओनली कॉजिंग इट टू हैपन। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आप उसे अपनी जिंदगी में खुद ब खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बोलेंगे जो चीजें जिनके लिए आप खुश हो सकते हैं, मे बी हो सकता है आपके घर पे एक बहुत अच्छी मेड है जो आपके लिए खाना बनाती है, तो यू कैन से आई एम सो ब्लेस्ड, मेरी इतनी अच्छी मेड है जो मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाती है, इतनी सपोर्टिव है, या मेरी फैमिली कितनी लविंग है, मैं जो करना चाहती हूँ दे अलाउ मी टू डू इट, या I had the best vacation. I just came yesterday from a vacation. So I had the best vacation. या आज का दिन तो बहुत अच्छा है। आप जो बोलेंगे, आप खुद अपनी, हमें लगता है कि अरे मैं तो सिर्फ आई एम जस्ट सेइंग फॉर द हेक ऑफ इट, बट एक्चुअल में यू आर ओनली डिजाइनिंग योर ओन लाइफ विद एवरी सिंगल थॉट, फीलिंग एंड वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। अभी आप इसको अपने लिए कैच करना कर सकते हैं, आगे की जो हमारी ये 30 दिन की जर्नी है उसके अंदर हम इसकी प्रैक्टिस पे भी आएंगे। प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। You will have heard sayings like, whatever goes around comes around. You reap what you sow well, and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. And what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you give, the more you will receive. हाँ, सो इसके अंदर इसने आपको ये बताया दैट इवन द न्यूटन्स लॉ टॉक्ड अबाउट दैट कि व्हाट every action has an opposite and equal reaction. So it's like every action of giving will bring about, you know, something that you will get in return. जो आप दे रहे हो घूम के आपके पास वापस आएगा। तो जो आप अगर दे रहे हो, आपके देने में अगर कृतज्ञता है, ग्रेटफुलनेस है, तो आपके पास घूम के भी वैसी सिचुएशंस और आएंगी जहां पे आप और ज्यादा कृतज्ञता दे पाओगे। बहुत ही सिंपल शब्दों में ये चीज। अच्छा, सो योर असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ये ना मैजिक बुक जो है ये जर्नी का सेकंड स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। फर्स्ट स्टेप सीक्रेट बुक है।
आप बुक छोड़ दीजिए, आप अभी फिलहाल मूवी देख लीजिए, ठीक है? एक सीक्रेट के नाम से मूवी है, 1.5 घंटे की मूवी है। सॉरी, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। हिंदी में देखना चाहो तो यूट्यूब पे है, इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे है। मैं लिंक उसका आई विल शेयर ऑन द ग्रुप, तो आप सब लोग उसमें देख लीजिएगा। बट मेक श्योर दैट यू वॉच दैट मूवी। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, भले वो इस जर्नी में ना आए, मगर वो बुक, वो एक ऐसी बुक है, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो आपको अपनी लाइफ को जीने का तरीका बहुत ही समझ आ जाता है, लाइक सॉर्टेड हो जाता है कि अच्छा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है। मतलब एक बेसिक फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से मिल जाता है वो मूवी देखने से। तो आप सब लोग प्लीज देख लीजिएगा। प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। The golden thread of gratitude. Dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permitting one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you are rejoiced in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever is offered, he accepts with joy. King David spoke of giving thanks to the whole world, for everything between the heavens and the earth. And Jesus said, thank you before he performed each miracle. So it doesn't matter what religion you're from or not. Everybody, आप देखो ना, मतलब Krishna said that whatever he is offered, he accepts with joy. जो भी उनकी लाइफ में आता है, ups and downs and goods and not so goods, whatever he is offered, he accepts with joy. जॉय तभी आता है ना जब आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल होगे, तभी तो जॉय आएगा. Jesus said thank you before he performed each miracle. Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Muhammad said that gratitude for the abundance you have received aaj tak is the best insurance that the abundance will continue. So if you really look at it, all of them are talking about the same thing. Doesn't matter who you follow, doesn't matter. I mean, from the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Eskimo, and Maori, the practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. Most of them have gratitude at their core. कि भैया शुक्राना करो for whatever you have received in your life. That is what they're talking about, more or less. Please continue reading. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with yourself. Tecumseh, Shawnee Native American leader, 1768, 1813. History is laden with famous figures who practiced gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King, the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesop, Blake, Emerson, Dickens, Proust, Descartes, Lincoln, Jung, Newton, Einstein, and many, many more.
हाँ, मतलब all of these people are the top. You think of the greatest painter, okay, Leonardo da Vinci. You think of the greatest writer, Shakespeare. You think of the greatest scientist, Newton. Like ये हमारे दिमाग में. Although these people have not been alive for many years, but till date, when you think of the top of their field, these are some names जो automatically खुद pop up होते हैं. Yes, no. You think of अच्छा freedom fighter गांधी जी, मदर टेरेसा, वेरी मतलब उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया. अफ्रीकन अमेरिकन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बहुत कंट्रीब्यूट किया. स्पिरिचुअलिटी में दलाई लामा ने बहुत कंट्रीब्यूट किया. So if you really look at it, the people who were at the top of their field, whatever field they chose, all those people, they practice gratitude. All those famous figures, not just like once कि आज कर लिया, आज मैं grateful हूँ, that's it. No, their lifestyle was something. Their lifestyle was of practicing gratitude, and this is not me speaking. ये अभी हम आगे आगे इस जर्नी में बढ़ेंगे तो इस बुक में खुद इनके इन लोगों से रिलेटेड एक्सरसाइजेस आगे आएंगी. Please continue. Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe, and we asked about his monumental achievements. He spots only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people over 100 times a day for the work they had done. It is an any wonder Anyone? that it is any wonder that so many life's mysteries were revealed to Albert Einstein. Is it any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries in the history? He practiced gratitude every single day of his life, and in return, he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, and the prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to the experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yeah, so you've got to practice it. Most of the people, like a lady shared, before we started, कि मैंने मैम की सेशन सुने तो हैं, सारे सेशंस रिकॉर्डिंग सुनी है मगर प्रैक्टिस नहीं करी. सो श्योर आपको नॉलेज होगी कैसे करना है, मगर पीपल डोंट नो एक्चुअली हाउ powerful it is to do the practice of gratitude, not the knowledge of gratitude. But when you practice it, things around you change. So we will read from here tomorrow. ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे My Discovery से. So thank you Archana ji for reading. Thank And you, Annie, for giving me a chance. thank you. Annie, thank you. Thank you for today. Thank you, everyone, for अरे रुक hearing जाओ, me. Thank you. read नहीं किया मैंने, रुक जाओ. मैंने नहीं बोला थैंक यू फॉर कमिंग, अभी 2 मिनट रुक जाओ. हाँ, सो फॉर ऑल द पीपल जो इस बुक में पहले आ चुके हैं या हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको क्या आज के सेशन से कुछ अंदर से लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है? लाइक डू यू फील सम सॉर्ट ऑफ excitement or some sort of I don't know what's going to happen after this? Yes. So my invitation Yes, to all of definitely. you is, Definitely magic happen. yeah, thank you. So my invitation to all of you is, see अभी ना ये हमारी बुक नॉर्मली डे 0 हम एक ही दिन में कंप्लीट कर देते हैं. नॉर्मली मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम टुडे दैट वी आर स्प्लिटिंग द डे 0 इन 2 days. नॉर्मली आप सबको पता है हम एक ही दिन में कंप्लीट करते हैं. यस, आज पहली बार ऐसा डे 0 को भी 2 दिन में स्प्लिट कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि
nothing happens by coincidence. कोई भी चीज ऐसी नहीं हो जाती है. तो अभी हमारी जो बेस है वो सेट होनी स्टार्ट की है. तो अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को जानते हो, अभी तक आपने इस बुक में जो भी सुना पढ़ा, आपको लगता है अगर आपके बच्चे भी अगर इस प्रैक्टिस में आएंगे, एंड आई एम टेलिंग यू, बच्चे आपसे मच जल्दी पकड़ेंगे. द यंगर द चाइल्ड इज, द क्विकर दे विल गेट दिस. जितना, सो माय रिक्वेस्ट इज, आप अपने बच्चों को, आप अपने हस्बैंड को, वाइफ को, पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, जिसको आपको लगता है कि जो अभी हमने इस मैजिक की बात करी है, अभी तो नॉलेज है, प्रैक्टिस वाला पार्ट तो भी आना है. So you can invite all of them for tomorrow's session, and then they can see for themselves, whether they want to continue or whatever they choose to do. But my request is, ये मैजिक बुक सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद मुझे नहीं पता कब होगा, क्योंकि मैंने जैसे ही इसका मैसेज डाला था ना, आश्मी मैम ने मुझे बोला तू तो बड़ी पागल है, फिर से शुरू कर दिया तूने मैजिक बुक, क्यों कर रही है फिर से, हो नहीं क्या तेरा बहुत. तो आई डोंट नो, आई एम गेटिंग स्टफ लाइक दैट कि तुझे भी कुछ और करना चाहिए, पावर करना चाहिए, ऑल दोस थिंग्स. सो आई डोंट नो इफ आई विल डू अ मैजिक बुक सेशन नेक्स्ट मंथ. आई माइट डू पावर, आई डोंट नो. सो अंटिल देन माय रिक्वेस्ट इज, ये वाला मैजिक बुक सेशन तो चल रहा है, मेक श्योर दैट यू इनवाइट ऑल द पीपल, योर किड्स, प्लीज इनवाइट योर किड्स. अगर आप स्कूल की टीचर हो, ट्यूटर हो, anything like that, you teach people, invite them. There is no cost to joining this class. So yeah, that's all I had to say. And now agar aap mein se kisi ka koi question hai regarding what we read today, otherwise we'll complete today's session. Any question anyone has, ya aapko kuch acha laga aaj ki class mein, kuch share karna chahte ho before we complete? Hi, good morning. I just had a question. Yeah. Typically, people talk about saying opposites attract, right? And the law of attraction that you spoke about, and you're bringing in Newton's third law. Just want to understand, how do you kind of correlate? Because, I mean, I have read the book in the past. They are different things. Don't mix. They're Okay. different. Yeah, law of attraction is very simple. It says like attracts like. Jaisi karni, waisi bharni. So my request, my invitation to you will be watch the Secret movie. That will explain it much more. Because ये magic book ना second step आता है, तो उसमें इतना law of attraction के बारे में बात नहीं करते हैं, because they presume कि आप already secret movie या secret book पढ़ के यहाँ पे आ रहे हो. Okay, got it. Watch Thank that you. movie, it will answer your question. Okay. Annie, I would like to ask a little question to you. What motivates you to take these sessions? I mean, I know you have been doing for a very long time. What is it that you just get up in the morning and you're like, okay, I'm ready to go? So okay. So basically, so initially when I started, I started last year, I think June was my first batch. I started for young people. I started that because I knew कि उस टाइम पे ना आश्विन मैम भी सेशन लेते थे एडल्ट्स का, एंड वो ना बच्चों के लिए मुझे लगता था अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों की प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, बच्चों की अलग होती है. तो मुझे लगा था यार मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है. एंड जब पहला सेशन किया एंड बच्चे आके कहते थे कि अरे दीदी आप मानोगी नहीं, मैंने ट्यूशन में बोला कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, मुझे इतने मार्क्स मिल गए. द काइंड ऑफ they would share it with, या they would say कि मैंने पता है दीदी होमवर्क किया था और मैंने मैनिफेस्ट किया कि आज टीचर क्लास कैंसिल कर दे, एंड क्लास कैंसिल हो गई. They would say stuff like that, and it would give me really they would want to buy कि मुझे ये अपने हेडफोन्स खरीदने थे एंड पापा मना कर रहे थे, एंड दीदी पता है पापा ने दिलवा दिया. तो stuff like that. So at a very young age, they would share it with so much excitement and everything. So I was like, this is wonderful. So I went on for that, and later I thought, yaar, कितना cool होगा अगर if all the people they have access to this. So I did it because I initially did it because मुझे था उनके लिए बहुत अच्छा होगा. फिर उसके बाद आगे चलते चलते एक ऐसी बुक आई पावर नाम से, जिसके अंदर वो दसवंत की बात करता है. दसवंत, आई डोंट नो इफ यू नो, सिखिज्म में ना मतलब माय मॉम टोल्ड मी, आई डिडंट नो ऑफ इट, माय मॉम टोल्ड मी दसवंत होता है कि आप अपनी जिंदगी का 10%
10% of the money you're earning, 10%. So tan man dhan, तीन जगहों से 10% give back to the society. Whatever it's giving to you, 10% give it back. तो अगर दिन में 24 घंटा है तो उसमें से 1 घंटा निकाल के give it back. अगर इतना महीने का कमा रहे हो तो इतना give it back. So then that is what kept me going कि okay, this is my 10th of giving back. Thank you Annie, so much. Thank you so much. I have a question too. I just wanted to, understand from you just one point. Like you have been through, you are doing just great work. I really appreciate this. I just wanted to understand, like from last June till today, what is the, what different meaning of gratitude you have understood through all this? So my invitation to you will be experience for yourself. You experience for yourself. मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. I will, hopefully. Yeah. I'm just, So see, I'll tell you. So when I first started, the very first time I touched the magic book, and it said, when I read this line which we talked about today, I thought to myself, I'm a very polite person. I'm a very वेल मैनर्ड पर्सन. कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है गार्ड तो मैं बोल देती हूँ उसको थैंक यू, या कोई वेटर मेरे लिए खाना लाता है तो मैं बोल देती हूँ थैंक यू. तो ऐसा नहीं है मैं बड़ी बदतमीज लड़की हूँ. आई एम डिसेंट. So that's what I first thought, of what gratitude meant before I came into this book. And the first time I did this, my only thing was मेरे को तो gratitude का जी भी नहीं आता है. Like I am the least grateful I could be. I don't know anything about it. And when and through with the practices, it just made me feel that there is so much to be grateful for what my parents have done for me, for what they've provided me with, for what this beautiful youth. So I can't put in words. It's a very overwhelming feeling that you get, when you stay in this practice, and every time it's something else. And I'll tell you, आप ये हर इंसान की अपनी अपनी जर्नी रहती है. Like even my mom wants to give me that experience, but I can't get it from her speaking. ये अंदर से आती वाली जर्नी है. ये कोई I can't speak it to you. You'll experience it for yourself. sure. Thank you. Yeah. Thank you. But my only request to each and every one of you is stick through the journey. Stick through the journey. मतलब make sure 30 दिन यहाँ पे आपने अपने निकाले हैं, 1 घंटा निकाला है. Make sure you do it completely. हाँ, my word is that you will get value from these 1 hours. I'll give my everything to it. Thank you. Thank you so much. Really appreciate this. Thank you. Yes, okay. अच्छा हाँ, sorry, one more thing I wanted to invite you for. आज हमारा 12 से 2 बजे, coincidentally it's today only, आज 12 से 2 बजे आश्विन मैम का एक सेशन है which is about the purpose for your life. कि आप अपनी जिंदगी में, so that is not related to the magic book, that is an independent session, that is about आप अपनी लाइफ में how to attract things that you want. So आपको जितना समझ में आए, because आपने मैजिक बुक पहले नहीं किया है, जितना समझ में आए आप समझो, but I will highly recommend आप उसको अटेंड करो. Zoom link उसका will be same as today morning Zoom link, same 12 बजे. So all of you are most welcome to be there also. That good morning, Annie. Annie, that recording will be available on the YouTube. I don't know. I think so, but because I am traveling, I really want to hear from her. So I hope so. Okay. Thank you. Yeah, so that session is going to be very powerful. Each and every one of you, अभी हो सकता है आपकी family सो रही हो, मगर उसके अंदर आज 12 बजे भी आप अपने, take your children, your friends, family, kiddie party friends, all those things. ठीक है? Yeah, okay. So any other question before we complete today's chapter? Annie, I want to ask something. हाँ जी, please. एनी, मैंने आपकी मम्मी की भी रिकॉर्डिंग्स देखी है. उसमें कई बार आशमी मैम बोलती है, अरे यार 2 लैंग्वेजेस में. एनी मुझे कई बार बोलती है कि मम्मी एक ही लैंग्वेज में पढ़ लिया करो. बट मेनी टाइम्स it happens, I miss out the second language. First language तो I am pura attentive. But is it like, can I leave the meeting after we do the first language session? Like, see,
It does not come from inside. ऐसे लगता है नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है. But then I you can know. also, I mean, I can also do the reading in so I can also leave and say, okay, my job here is done, bye bye. But I don't. I'm just Any, asking. I'm asking. What do you think कि हम लोग को एक ही languages में सुनना चाहिए कि क्या करना चाहिए? so my highly recommend आपकी जो नॉन डोमिनेंट लैंग्वेज है, मतलब अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आपको हिंदी में सुन के ज्यादा वैल्यू मिलेगी, अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आपको इंग्लिश में सुन के ज्यादा वैल्यू होगी. बिकॉज जो लैंग्वेज हम ज्यादा बोलते हैं ना, उसको वो हमारी सेट लैंग्वेज होती है. जब आप दूसरी लैंग्वेज में वो सेम चीज सुनते हो, कुछ नया ओपन अप होता है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड बोथ लैंग्वेजेस. I mean, for me also, when I'm explaining, although it's the same chapter, but even when Yes. I'm explaining, something new opens up when I read Hindi ka English and English ka Hindi. Yes, Something, I've seen that. Yes, yes. Thank you. so it's different. Thank you. Thank you so much. Thank you. And I'm really happy. The feeling was wow in the morning. Wow, today, 0 days starting. I made a point. Everything should end up and, I should be ready by 7:20. Beautiful. Thank you. Thank you so much for being here, and thank you for reading for us. Thank you. Thank you. Thank you so much, Annie. Yes. Okay. Any other question before we complete today's session? So thank you, everyone. And I will see you all at 12 o'clock today with your friends and family. And then tomorrow again with your friends and family. Have a wonderful day ahead. Thank you so much. Thank you. Thank you, Annie, for Thank giving you, us your thank you, time thank and your you. Thank you, knowledge. Annie. Thank Thank you you. so much. Thank you, Annie. Thank you so much, Annie. Thank you.